afternoon and a very warm welcome to Thorough Newspaper Analysis. Today is 2nd of May and this entire video series is brought to you by LawSikho. As far as the agenda for today is concerned, the same can be seen right here on your screens. The first segment that we cater to, it is the segment of editorial, and for today's discussion we've taken up an article that was published in The Hindu and it is titled as The Importance of Constitutional Punctuality. देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे with respect to the legal nuances of Article 200 and the power of governor when it comes to giving assent to a bill or withholding such an assent. हम बात करेंगे whether the governor can withhold assent for an infinite period of time जब कोई भी एक बिल उनके पास प्रेजेंट किया जाता है by the state legislature assembly for state legislative assembly or the council for the purpose of giving assent to such a bill. So इस जो article है इनके author he is a practicing advocate and he makes a compelling case for the fact that the governor cannot keep the bill or withhold the bill for an infinite period of time, and also that it is very high time that जितने भी constitutional bodies हैं वो किसी भी बिल या कोई भी constitutional function जो उनको perform करना है उसको एक time bound manner में perform करें. Now secondly we deal with the segment of news update where we take up national as well as international news update for the purpose of our discussion. And thirdly, of course, we have the legal news update segment where we have one update from a High Court and the another from the Honorable Apex Court. So with this, let's dive into the TNF for today. The editorial, it is titled as The Importance of Constitutional Punctuality. देखिए इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो पहले हम बात करेंगे the recent scenario जहाँ पर we are going to take up discussion around two states. पहला तो the state of Tamil Nadu and secondly the state of Telangana जहाँ पे गवर्नमेंट और गवर्नर के बीच में कुछ कॉन्फ्रंटेशन चल रही है एंड इसमें सुप्रीम कोर्ट की भी कुछ ऑब्जर्वेशन है, हम उस पर देखेंगे. सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आई हैव विद मी, वी आर गोइंग टू टेक अ डिस्कशन अराउंड दैट. सेकेंडली हम बात करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम क्या है इस पूरे मैटर में. वी टेक अप डिस्कशन अराउंड आर्टिकल 200, आर्टिकल 355 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. वी ऑल्सो टेक लुक एट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट व्हेन इट कम्स टू आर्टिकल 200 एंड देन वी डाइव इनटू दिस सेगमेंट जहां पर हम बात करेंगे कि सिमिलरली यूके एंड यूएस में क्या सिचुएशन है, क्या लॉ है, एंड देन वी टॉक अबाउट ए डिसीजन ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट. सो लेट्स स्टार्ट विद द वाई और द रीसेंट अपडेट. देखिए पहले हम बात करते हैं तमिलनाडु की, तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू पे अटेंशन टू इट. देखिए तमिलनाडु में क्या हुआ था कि जो तमिलनाडु के गवर्नर है उन्होंने एज मेनी एज 13 बिल्स को काफ़ी टाइम से रोक रखा है और उसको ना ही तो असेंट दिया है ना ही उस बिल को भेजा है टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर द पर्पज ऑफ रिकन्सिडरेशन. इससे क्या हुआ कि जो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया एंड उस रेजोल्यूशन में एसेंशली उन्होंने गवर्नमेंट और द यूनियन ऑफ इंडिया एंड प्रेसिडेंट से कुछ डायरेक्शंस मांगी. दे सॉट डायरेक्शंस फ्रॉम दीज अथॉरिटीज to the governors to act on bills that are passed by the state legislature in a time bound manner. Also Tamil Nadu की जो state government जो chief minister है he wrote to his counterparts from other states also. उन्होंने उनसे भी अपील करी कि आप भी ऐसे रेजोल्यूशंस पास करिए ताकि इस पूरे जो मुद्दे पे कुछ क्लैरिटी आए. अब इसके रिस्पॉन्स में 3 स्टेट्स स्टेट और द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, केरला एंड देयर वाज अनदर स्टेट एज वेल, इन तीनों ने एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया एंड अदर्स हैव नॉट रिस्पॉन्डेड एज ऑफ दिस मोमेंट. अब इसकी हम लीगैलिटी की बात करें तो ये हमने हमारे प्रीवियस टीएनएम में डिस्कशन करा था. आई वुड लाइक टू ब्रिंग दैट हियर ताकि हमें और क्लैरिटी मिले. तो 2 आर्टिकल्स हमारे लिए रेलेवेंट है. पहला वी हैव आर्टिकल 200 एंड सेकंड वी हैव आर्टिकल 355 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. देखिए आर्टिकल 200 जो है उसको समझना सबसे पहले ज़्यादा ज़रूरी है. ये आर्टिकल इट प्रोवाइड्स फॉर असेंट टू बिल्स. ये गवर्नर को 3 ऑप्शंस देते हैं कि जब भी कोई स्टेट लेजिस्लेचर से कोई बिल पास होकर गवर्नर के पास प्रेजेंट करा जाता है for the purpose of further action, governor either can of course give assent to the bill or reserve the bill for the purpose of the consideration by the president. अब जो this was the third option, जो second option है उसमें काफ़ी legal nuances involved है क्योंकि second option ये कहता है कि governor can withhold such assent. अब withhold का मतलब क्या ये है कि गवर्नर जो है जैसे पॉकेट वीटो में होता है, गवर्नर जो है वो इनडेफिनाइट पीरियड के लिए ही किसी बिल को मतलब ही कैन विदहोल्ड इट, या फिर कैन दी गवर्नर विदहोल्ड इट फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम एंड देन गवर्नर को जो है इस बिल को प्रेजेंट करना पड़ेगा टू द स्टेट लेजिस्लेचर
रिकंसिडरेशन के लिए। एंड अगर रिकंसिडरेशन करके स्टेट लेजिस्लेचर अगर उस बिल को फिर से वापस गवर्नर के सामने प्रेजेंट करते हैं तो गवर्नर के पास कोई ऑप्शन नहीं होता बट टू गिव असेंट। तो आर्टिकल 200 क्या कहता है, ये तो पहले 3 ऑप्शन देता है कि यू गिव असेंट, यू विदहोल्ड असेंट और यू रिजर्व द बिल फॉर कंसिडरेशन बाय द प्रेसिडेंट। फिर इसका फर्स्ट प्रोवाइजो कहता है कि जो गवर्नर है एज सून एज पॉसिबल अगर उनको लगता है तो किसी बिल में अगर चेंजेस चाहते हैं तो वो उस बिल को वापस भेज देंगे स्टेट लेजिस्लेचर के पास विद अ मैसेज। उस मैसेज में वो चेंजेस वो प्रपोज कर देंगे, स्टेट लेजिस्लेचर उसको रिकंसिडर करेंगे एंड अगर उनको लगता है कि हाँ ये अमेंडमेंट लाने चाहिए तो वो अमेंडमेंट अमेंडमेंट ले आएंगे। अगर विदाउट अमेंडमेंट भी स्टेट लेजिस्लेचर को लगता है कि नहीं द बिल इज फाइन एंड दे प्रेजेंट इट फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द असेंट ऑफ द गवर्नर अगेन, तो देन द गवर्नर हैज नो ऑप्शन बट टू गिव असेंट। तो यहाँ पर जो लीगैलिटी या टेक्निकलिटी है वो इट इज़ विद रिस्पेक्ट टू दिस वर्ड विच इज़ कि गवर्नर कैन विदहोल्ड द असेंट देयर फ्रॉम। इसके रिस्पेक्ट में इस जो आर्टिकल के ऑथर है उन्होंने कुछ एक इंटरप्रिटेशन दी है, वी आर गोइंग टू टेक अप दैट एज वेल। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 355 की। आर्टिकल 355 कहता है कि यूनियन गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो स्टेट गवर्नमेंट की फंक्शनिंग को अपने हाथों में ले सकते हैं। कब? जब 3 चीज़ें हों, इंटरनल डिस्टर्बेंस हो या फिर बाहर एक्सटर्नल फोर्सेस से डिस्टर्बेंस आ रही हो या फिर अगर जो स्टेट की फंक्शनिंग है वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में नहीं हो रही हो। तो ये जो थर्ड ऑप्शन है कि कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में अगर स्टेट की फंक्शनिंग नहीं हो रही हो तो यहाँ पर जो 200 आर्टिकल है वो क्या कहता है कि स्टेट हैज़ टू फंक्शन इन अ सर्टेन मैनर। अब यहाँ पे क्या हो रहा था, तमिलनाडु में स्टेट इस मैनर में फंक्शन नहीं कर रहा था, द गवर्नर वॉज एक्टिंग कॉन्ट्री टू आर्टिकल 200। तो इसलिए क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि आर्टिकल 200 की जो नॉन फंक्शनिंग थी गवर्नर के बिहाफ पे, इट वॉज an act which was not in conformity with the constitution. Thus the government had a power to approach the president for the purpose of seeking direction. तो ये हो गया इस रेजोल्यूशन की लीगैलिटी। दिस इज एन ओपिनियन दैट वाज फर्निश्ड बाय वन ऑफ द ऑथर्स एक प्रीवियस हमारे एडिटोरियल में। आई थॉट इट वाज रेलेवेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड इट। नाउ लेट्स कम टू द सिचुएशन ऑफ तेलंगाना। तो तेलंगाना में क्या हुआ, सिमिलर सिचुएशन हुई, गवर्नर का इनएक्शन हुआ, मैटर देन इट रीच द ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के सामने फिर द कोर्ट वाज सरप्राइज्ड ऑफ द फैक्ट कि जैसे ही मैटर सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा गवर्नर एक्टेड ऑन दीज बिल्स। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट डिड नॉट गो इनटू द मेरिट्स ऑफ द पर्टिकुलर पिटिशन, बट कोर्ट ने हाउएवर एक ऑब्जर्वेशन करी क्योंकि काउंसिल्स जो थे उन्हें कोर्ट से अर्ज किया कि ये जो है ना ये मैटर इट हैज़ बीन कमिंग अप टाइम एंड अगेन, तो यू रेस्ट दिस कंट्रोवर्सी फॉर वंस एंड ऑल। आप ये बोल दीजिए कि ये बता दीजिए कि गवर्नर को कितने टाइम पीरियड में एक्ट करना है। तो इसके रिस्पेक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन करी थी। लेट्स हैव अ लुक एट द ऑर्डर इटसेल्फ। अब देखिए इस मैटर में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन करी है दैट द फर्स्ट प्रोवाइजो टू आर्टिकल 200 जो कि ये बात करता है कि गवर्नर जो है रिकंसिडरेशन के लिए किसी भी बिल को भेज सकता है। तो द फर्स्ट प्रोवाइजो टू आर्टिकल 200 इट स्टेट्स दैट द गवर्नर में एज सून एज पॉसिबल आफ्टर द प्रेजेंटेशन ऑफ द बिल फॉर असेंट रिटर्न द बिल इफ इट इज नॉट अ मनी बिल together with a message for reconsideration to the state legislature. The expression as soon as possible, it has significant constitutional content and it must be borne in mind by the constitutional authorities. This is what the apex court held with this respect. देखिए जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था आर्टिकल 200 जो है वो गवर्नर्स को 3 ऑप्शन देते हैं, यू गिव असेंट टू द बिल और यू विदहोल्ड द असेंट और यू रिजर्व द बिल फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एंड व्हेन यू विदहोल्ड द बिल तो आप क्या करते हो, आप प्रोवाइजो पे जाते हो एंड यू सेंड इट फॉर रिकंसिडरेशन। अब द नब ऑफ द इशू इसका ये क्या है कि गवर्नर ने जो इस प्रोविजन है इसको बहुत ही रॉन्ग तरीके से अंडरस्टूड कर लिया है एंड दे आर स्टेटिंग दैट दे हैव डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज उनके पास ये पावर है टू विदहोल्ड। तो अगर वो चाहें तो विदहोल्ड कर सकते हैं किसी बिल को जो कि अगर सही नहीं हो। एंड इनफैक्ट ये एक गवर्नर का स्टेटमेंट भी था, इट वॉज ईदर द स्टेटमेंट ऑफ द गवर्नर ऑफ तमिलनाडु और दैट ऑफ द तेलंगाना। Now see, अभी ये जो ऑथर है he says however the direct import of the words that have been used in article 200 and the composite reading of debates of the constituent assembly वो क्या पोर्ट्रे करती है, it portrays altogether a different interpretation। अब इसके लिए हम बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट क्या थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आर्टिकल 200 it was draft article 175 it has this proviso which said that provided that where there is only one house of the legislature and the bill it has been passed by that house then the governor may in his discretion return the bill together with a message
requesting that the House will reconsider the bill. तो यहाँ पे गवर्नर के पास डिस्क्रिशन थी, बट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर उन्होंने कहा कि वी रिमूव दिस डिस्क्रिशनरी वाला जो पॉइंट है, एंड ही सेड दैट गवर्नर्स इस मामले में उनके पास डिस्क्रिशन नहीं होनी चाहिए. तो देयरफॉर फाइनल आर्टिकल दैट वी हैव दैट वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली and which is now there in the Indian Constitution, it explicitly negates any discretionary power. इसके रिस्पेक्ट में एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है 1974 का, विच इज शमशेर सिंह एंड अनदर वर्सेस द स्टेट ऑफ पंजाब. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो डिस्क्रिशन गवर्नर के पास है, एक तो बहुत ही लिमिटेड कई प्लेसेस पर है, और जहाँ पर वो है वहाँ पर भी गवर्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऐसे तरीके से ना एक्ट करें विच इज़ डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट. एंड फर्दरमोर सुप्रीम कोर्ट ने रिपीटेडली ये हेड किया है कि गवर्नर शैल एक्ट ऑन दी एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जब भी उनको डिस्क्रिशन एक्सरसाइज करनी हो. तो इसके रिस्पेक्ट में फिर दिस इज व्हाट द ऑथर हैज सेड. ही सेड दैट द टर्म विदहोल्ड्स एसेंट देयर फ्रॉम इट हैज बीन willfully misrepresented or interpreted to mean withholding the assent, जिसको हम वीटो पॉकेट ऑर्डिनरली कह देते हैं. तो the author is saying that this is a very wrong understanding of the constitution, because एक क्लियर और सिंपल रीडिंग भी अगर हम दें इस पूरे पर्टिकुलर आर्टिकल को, तो ये हमें क्या कहता है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड रीडिंग ऑफ विद होल्डिंग असेंट, this can only mean to return the bill and not to withhold the bill for any amount of time. So the problem, however, it is accentuated as there is no time limit which is prescribed for the purpose of returning bill, although the phrase as soon as possible has been used. जैसे कि हमने अभी रिसेंटली देखा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में भी उन्होंने कहा है कि ये एक इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशनल कंटेंट है जिसको मानना चाहिए, बट क्योंकि ये टाइम लिमिट नहीं है तो गवर्नर जो है अपनी विंस एंड फैंसीज पर चल रहे हैं. अब हम बात करते हैं कि बाकी जूरिस्प्रूडेंस में क्या है सिनेरियो. लेट्स टॉक अबाउट यूनाइटेड किंगडम. सो सी इट देयर हैज बीन नो रॉयल वीटो सिंस 1708, जहाँ पर एक बिल को वीटो करा गया था बाय क्वीन एन. एज फार एज द सिचुएशन इन यूएस इज कंसर्न्ड, तो देर इज अ लिमिट ऑफ 10 days जो कि प्रेसिडेंट को दी गई है कि आप असेंट दे दीजिए या फिर वीटो कर दीजिए. अगर प्रेसिडेंट ना असेंट दे ना वीटो दे इस पूरे लिमिट में 10 days में, तो ऑटोमेटिकली बिल जो है उसको ऐसा मान लिया जाएगा कि वो एक्ट बन गया. अगर प्रेसिडेंट वीटो एक्सरसाइज करे तब क्या सिचुएशन होगी, एंड ही रिटर्न्स द बिल. तो जो दोनों हाउसेस हैं कांग्रेस एंड सेनेट, वो बोथ चेंबर्स ऑफ कांग्रेस दे मस्ट ओवरराइड द वीटो फॉर इट टू बिकम लॉ. अगर उसको लॉ बनाना है बिल को, तो ये जो दोनों हाउसेस हैं उनको वीटो को ओवरराइड करना पड़ेगा. अब कुछ जुडिशरी की और स्टैंड्स की बात करें तो 2020 का डिसीजन है जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर को डायरेक्शन दी थी, स्पीकर ऑफ द मेघालय लेजिस्लेटिव असेंबली, उनको कहा था कि आप विद इन 4 weeks एक्ट करिए विद रिस्पेक्ट टू अ मैटर फॉर डिसक्वालिफिकेशन ऑफ एनी एमएलए, जो कि 10th शेड्यूल का मैटर है. ऑल्सो अब जो ये रिसेंट सुप्रीम कोर्ट का प्रोनाउंसमेंट हमने देख ही लिया ऑब्जर्वेशन कि एज सून एज पॉसिबल दिस इज सिग्निफिकेंट एंड द गवर्नर शुड नेसेसरली बियर दिस इन माइंड. And with this, the author ends this particular article with his parting note, which was that it is high time कि जितने भी constitutional machineries हैं या constitutional bodies के head है, be it the president or the various the speakers of the assembly, state assemblies or the parliament or the Lok Sabha as well, they should suo motu evolve guidelines for the purpose of discharging their duty in a very time-bound manner. And with this, we proceed to the next segment for today. Now moving on to the national news segment, the first update it is with respect to appointment of the new chairperson of LIC. So Siddhartha Mohanty, he has been appointed as the new chairperson of LIC, which is Life Insurance Corporation of India. He is going to be the chairperson until June of this year, of the next year, and following this he is going to serve as the MD and the CEO until June of 2025. Mohanty, who is currently the managing director, he has been serving as the interim chairperson of the state-run LIC since March this year, and he is going to be replacing M.R. Kumar. Now the next update is also with respect to appointment. So K. Mohanty, who is Ajit Kumar Mohanty, he is the new chairman of Atomic Energy Commission. He is a well-known physicist and also serves as the director of Bhava Atomic Research Center. He has been selected as the new chairperson of the Atomic Energy Commission and the secretary of the Department of Atomic Energy. This appointment, it means that he is going to be responsible for overseeing India's nuclear program, and he has taken over or he will be taking over this charge from K.N. Vyas.
Next update is in the category of sports. So, veteran shooter Mairaj Ahmad Khan and young Ganemat Shikhon, they won gold in the skeet mixed team event, giving India its first medal at the International Shooting Sports Federation Shotgun World Cup. Now, the next update is in the segment of defense, and it is a historic moment because five cadets of the Officers Training Academy, Chennai, they've made history when they became the first women inducted into the Indian Army's Regiment of Artillery at their passing out parade. Now, with this development, it would mean that these women cadets they are going to face all of those opportunities and challenges which their male counterparts have been facing so far, and this marked a transformation in the Indian Army. Moving to the next update, this is with respect to Gujarat and the state of Maharashtra celebrating their 63rd Foundation Day yesterday, which is 1st of May. On this particular occasion, the Prime Minister Shri Narendra Modi he extended his greetings to the people of Gujarat and that of Maharashtra. Nirmala Sitharaman, who is the minister responsible for the finance and corporate affairs, she launched a book called Reflections, authored by Narayanan Vagul, who is a well-known banker. This book it provides a detailed account of his experience in the financial landscape of India over the several decades. Sitharaman, she praised him for his leadership qualities and his extensive experience in the banking sector. She also praised the fact that he has highlighted the ideas and the vision of women empowerment, and she stated that this indeed is very important to have more women in the leadership role when it comes to the financial services in India. And this has brought us to the international segment for today. The first update is coming from Japan. Japan has come up with its new 5-year ocean policy. So the policy it calls for stronger maritime security, including bolstering its coast guard's capability and cooperation. Why? Because there is this military threat that is growing when it comes to China, increasingly asserting its control over the regional seas. Moving on to the next update in the same segment, this is with respect to the International Labour Day. We also discussed an editorial on this particular update yesterday. So, the International Workers' Day, also known as the Labour Day, in some countries and often referred to as the May Day, it is a celebration of laborers and the working class that is promoted by the International Labour Movement, and it occurs every year on 1st of May or the first Monday in May. So yesterday both of these fulfilled, which is it was 1st May and it also fell on a Monday. And with this we come to the last segment for today, which is the legal update segment. See, before we proceed and understand as to what the Supreme Court held in this matter, एक हमारे लिए ज़रूरी होता है कि समझना कि what is irretrievable breakdown of marriage and इसका पूरा concept क्या है. देखिए, irretrievable breakdown of marriage क्या होता है? जब आपकी marriage जो है it has come to such an extent कि there is no scope whatsoever for reconciliation and the marriage has been broken down irretrievably, मतलब उसको आप retrieve नहीं कर सकते. तो ये जो ग्राउंड है ना irretrievable breakdown of marriage, it is not statutory recognized as a ground of divorce in our law. However, इस ग्राउंड पर divorces जो है वो courts जो है उसको allow करते आए हैं, and Supreme Court has been using its power to give complete justice to the parties in order to allow divorce on this particular and काफ़ी ग्राउंड एंड काफ़ी सारे केस लॉज भी थे. तो इसी रिस्पेक्ट में सुप्रीम कोर्ट के पास ये मैटर आया कि ये तो दिस इज नॉट अ ग्राउंड विच इज रिकग्नाइज इन द लॉ, देयरफॉर द इशू वाज रेफर्ड टू ए कॉन्स्टिट्यूशन बेंच टू डिसाइड. And while answering this particular reference, the Supreme Court 5-judge bench has observed that it would be in the best interest of all, including the individuals involved, to give legality in the form of formal divorce to a dead marriage. Otherwise, क्या होगा? Litigations are going to pile up as a result of this, and this is not going to help anybody. This is going to further torment the parties, further aggravate their miseries. This was held by the Honorable Apex Court in the case of Shilpa Sailesh versus Varun Sreenivasan, and also the court identified certain factors which needs to be taken care of while exercising this power of the Honorable Apex Court to do complete justice while allowing divorce on this particular theory. These ground you may go ahead and read in this particular matter. Now moving on to the next update, which is coming from a High Court of India, which is the Karnataka High Court. So the Karnataka High Court has recently made it clear that under the Right to Information Act,
A public information officer has no authority whatsoever to prefer an appeal against an order which is passed by the appellate authority, directing him to furnish information to an applicant under the Act. The court further added that the power to prefer an appeal challenging an order passed by the appellate authority, it has been conferred only on the persons who have sought the information in the first place. And with this, we've come to an end for the TNA for today. In case you want to get access to the free study materials that we curate or the TNA slides used in this particular video, I would encourage all of you to join our Telegram channel. For the same, you may scan the barcode here or you may click on the link which is provided in the description. These are the point of contacts for you to refer and to contact LawSikho. Also, the quiz which is based on yesterday's TNA, the link for the same is provided in the description of this video. I would again highly encourage all of you to go ahead and attend the same. Thank you for being with us. Happy learning.